Okay, so let us start your snap into fluid mechanics. Okay. Okay, so first of all, just tell me, how do you define the fluids? Sir, fluid is anything that deforms under the influence of shear stress, no matter how small it is. How small is it? Okay, okay. And how do we define the compressible and incompressible nature of the fluids? So compressible fluids means whose density varies with time as well as spatial Hmm. coordinates, and incompressible fluid means whose density remains constant. So is there any condition when we consider compressible fluid as an incompressible one? Hmm. Uh, Yes, tell me. Is there any condition when we consider the compressible fluid as a incompressible one? compressible as incompressible. Yes. So at very high pressures. At very high pressure. Okay. Just tell me one thing. What do you understand by the Mach number? Sorry, sir. What is Mach number? What is Mach number? Hmm. Mach number. Yes, Mach number. Sorry, sir. No, no, I have no idea. Okay. Okay. What are the assumptions taken in the Bernoulli equations? The assumptions are Hmm. streamline flow, then incompressible flow, steady state. These three. Okay. So can we write the Bernoulli equation for compressible flow? Sorry, sir. Or is it necessary only, or is it valid only for the incompressible flow? Sir, uh, we can write it in differential form Bernoulli equation for compressible fluids. But traditional Bernoulli equation P by rho g plus V Hmm. square by 2g plus z is equal to constant. That is for incompressible fluids. Okay. Okay, that's okay. Okay. Just tell you one thing. Do you know anything about the static Pitot tube? Yes, sir. Pitot Ex- tube. yeah. Explain me the principle. The Pitot tube measures Hmm. the flow rate Hmm. in a pipe or in a river bed. Hmm. We use it to measure flow rate. Sir, Hmm. it works on the principle of stagnation pressure. It works on the principle of stagnation pressure. Pressure. Okay, that's okay. Okay, and what is the meaning of stagnation pressure? Um, Sir, when Hmm. velocity, when when a fluid strikes pitot tube, its velocity becomes zero at that point. So the whole Hmm. kinetic energy is converted into pressure energy. That is called stagnation. Whole pressure energy is converted into stagnation energy. Whole kinetic Kinetic energy is converted into stagnation pressure. energy. Okay, that's okay. Okay, suppose if you have a container. Okay, suppose if you have a container and there is a horizontal pipe installed at the bottom. Okay, and if I am maintaining a water level at a let us say at h height, in that case, just tell me what will be the total magnitude of its total energy at the exit of the pipe. So can you repeat the question? If there is a simple container, okay, and there is a horizontal pipe at the bottom, okay, Hmm. and the fluid is maintained up to height capital H. Now tell me what will be the total energy of the fluid at the exit of the pipe if you have to consider all the losses, major as well as the minor losses. Hmm? Just So perform the calculations. Hmm. there is a container and there is a You pipe at can the bottom. just draw the diagram. There is a container, simple container, and there is a horizontal pipe installed at the bottom. Installed at the bottom. Like this, No, no, there is a container and there is a horizontal pipe installed. Draw a container and
install a horizontal pipe at the bottom. Okay, you mean okay, like this, sir. Last Yes, one. yes. Okay. No, so now if the fluid is maintained in the container at a height of capital H, Okay. okay, in that case, what will be the magnitude of the total energy at the exit? If we have to consider all the losses, major as well as the minor losses. Sir, at the end of the pipe, firstly, that Mm, pressure energy will be converted into kinetic energy. Then mm. there will be losses due to frictional major losses, Yeah, you have to and consider all the losses. Just consider all the losses and tell me the exact value of the total energy. sir, sir, Tell me the value. sir, total energy will Mm. be mass of water into G into H minus 4 FLH minus beta into H. Okay, okay, that's okay. Okay, just tell me how did you characterize the laminar and the turbulent flow Sir, with the help of Reynolds numbers. with the help of Reynolds number? Okay, just explain me the Reynolds number. The Reynolds number, it is the ratio of uh, inertial forces to the viscous forces. Mathematically, it is density into the rho v Mm, into hydraulic diameter upon dynamic mm, viscosity. okay, okay, just tell me one thing. What is the meaning of fluid continuum? Why we consider fluid as a continuum substance? The fluid continuum means, for example, if we take a control volume, Mm, so uh, before the fluid continuum, the mass enter there. We cannot assume that that control volume, the mass entering and going out of the control volume will be means erratic. We cannot assume the properties of fluid to be constant in that control volume. So assume we assume a volume to a continuum point, after which we can assume that properties of fluid remains constant in that control volume. okay, ओके सही लगे प्रोवाइड में फीडबैक देखो आपके पास यहाँ पे जो आंसर प्रोवाइड कर रहे हो ठीक है कोई इशू नहीं है कुछ कुछ जगह पे जो लैग कर रहे हो बेसिक बेसिक चीजों पे उसके बाद आपको गो थ्रू करने की रिक्वायरमेंट है जैसे बर्नौली क्वेश्चन की जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कंटेनर वाला उस केस में जो एग्जैक्ट वैल्यू आपको देखने को मिलेगी आरटीएक्स से तो जीरो इक्वल आपको देखने को मिलेगी ठीक है ना इन दैट केस आपको सिर्फ एक बर्नौली क्वेश्चन का यूज करके उसे कैलकुलेट करना था ठीक है तो उसे आप एक बार फिर से गो थ्रू करना कि जीरो इक्वल क्यों होगा तो उसमें आपको मेजर एज वेल एज माइनर लॉसेज जो हमारे पास यहाँ पे होते हैं अगर आपने लॉसेस तो आप पढ़ते हो मेजर लॉसेस भी आप पढ़ते हो माइनर लॉसेस भी आप पढ़ते हो ठीक है तो आपके पास यहाँ पे मेजर और माइनर लॉसेस को आप कंसिडर करोगे तो आपकी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद जो एग्जिट एनर्जी मिलती है जीरो के इक्वल यहाँ पे देखने को मिलती है ठीक है ना उसको एक बार जरूर अच्छे से गो थ्रू करना सेकंड आपके पास यहाँ पे जो बेसिक बेसिक डेफिनेशन है जैसे अगर फ्लो स्टडी मेरे पास है मान लो पाइप में तो उसका की प्रॉपर्टीज कॉन्स्टेंट रहती है तो उसको एक अच्छे से टाइप ऑफ फ्लूइड को अच्छे से यहाँ पे देखो आपके पास टाइप ऑफ फ्लोज को और टाइप ऑफ फ्लूइड्स को भी एक बार ठीक है वैसे आपका आंसर सही दे रहे हो कोई इशू नहीं है बस ये थोड़ा सा नर्वस नर्वस से लगते हो वो नहीं लगना चाहिए जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बाकी आंसर अपन सही दिया बाकी ओके। ऑलमोस्ट सही था एक दो जगह मिस्टेक करी वो आपको मैंने बता दिया कंटेनर वाला जो केस था बाकी आपके पास यहाँ पे जो आपने रेनॉल्ड नंबर को डिफाइन करा था उसको थोड़ा सा और अच्छे से आप डिफाइन कर सकते थे उसमें बोल सकते थे कि इस नंबर का यूज हम क्यों करते हैं कैरेक्टराइज करने के लिए कि वेदर जो फ्लूइड है कि आपके पास कौन सी प्रोसेस डोमिनेट कर रही है ठीक है हमने सिंपली डिफाइन कर दिया तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी उसको आप अच्छे से और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो इन पे ओके। थोड़ा सा काम कर लेना आपको यहाँ पे और कोई डाउट हो भी आपको
सर नर्वस मतलब किस सेंस से? मैं तो खुद तो नर्वस होता नहीं हूँ सर, नहीं, तो मतलब नर्वस इन कैसे? द सेंस जैसे आप जब बोलते हो, ठीक है, ऐसा लगता है हाँ, जैसे कि आप नर्वस हो, मतलब बहुत स्लो बोल रहे हो या बहुत धीरे से बोल रहे हो, तो ऐसा होता है, ओके, या फिर आपके पास फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है। ठीक ओके, ओके सर, ठीक। नाउ यू कैन बी।